हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम 2-in-1 चार्जर बनाएंगे, जिसके ज़रिए आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और दूसरा आप इससे 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं और 12 वोल्ट डायरेक्ट आप आउटपुट इससे हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी चीज़ 12 वोल्ट की चीज़ को आप इसे डायरेक्ट चला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें ये चार्जर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। To climb any mountain, time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal.
दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जो 2-in-1 चार्जर बनाया है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैंने उसके साथ पावर बैंक भी चार्ज करके देखा और उसके साथ मैंने मीटर लगा के देखा, तो दोनों वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रहे हैं। एक तरफ 5 वोल्ट आ रहे हैं और एक तरफ 12 और 16 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।